Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams and welcome to Law Digest. In this video, we are going to discuss about the BHU LLB exam. इस वीडियो में हम BHU LLB exam के जो बेसिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे कि ये एग्जाम होता कैसा है, इसके पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट द सब्जेक्ट्स दैट वी नीड टू प्रिपेयर ऑन, द टॉपिक्स, द एरियाज दैट वी नीड टू प्रिपेयर ऑन, एंड हाउ टू प्रिपेयर and how to go about these topics. Before moving on, if you don't want to miss such videos, आप ऐसी videos नहीं miss करना चाहते हैं, तो what you can do, you can subscribe to this channel and press the bell icon for important notifications and updates. Let's start with the eligibility criteria and seats for the BHU LLB exam. अब इस एग्जाम के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि आपके पास या तो बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री इनकी डिग्री हो, दैट इज योर 10+2+3 पैटर्न में आपके पास 12th के बाद या तो आपने बीए, बीएससी या बीकॉम या शास्त्री किया हुआ है, securing a minimum of 50% marks. So 50% minimum आपके marks होने चाहिए. Now this can be the criteria or any other degree. So this does not necessarily mean कि आपने यहीं से किया होना चाहिए, यही डिसिप्लिन से अपना ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, कोई और डिग्री भी हो सकती है that is recognized by the Bar Council of India. So any other degree that is recognized by the Bar Council of India will make you eligible for this examination. Now the minimum marks that you need to have is 50%. Minimum 50% marks होने चाहिए आपके. ऑल्सो अगर आपने ये बार काउंसिल का डायरेक्टिव है कि अगर कैंडिडेट्स ने अपना ये जो ग्रेजुएशन है किसी ओपन यूनिवर्सिटी से सिस्टम से किया है डायरेक्टली विदाउट हैविंग एनी बेसिक क्वालिफिकेशन, देन दैट पर्सन विल नॉट बी एलिजिबल. नाउ दिस डज नॉट मीन कि अगर आपने अपनी जो डिग्री है वो किसी ओपन स्कूल से, जैसे दिल्ली एसओएल से काफी लोग ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेड करते हैं, अगर आपने वहां से किया है, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम. यू वोंट बी एलिजिबल, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने बिना किसी मेरिट के सिर्फ डिग्री ऑब्टेन करी है, कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं थी आपके पास उस डिग्री को ऑब्टेन करने के लिए. देन इन दैट केस यू वोंट बी एलिजिबल फॉर द कोर्स. Now the criteria for general category, as you have seen, is 50%. 45% is there in case of OBCs and 40% in case of SCs and STs. So these are your criteria. Further, the number of seats that are there are 286. 286 आपकी seats हैं जिसमें से 15% जो हैं वो paid seats हैं जो reserved हैं. Now for further information, what you can do is, this has been picked up from the BHU LLB prospectus that is available on the website. I will attach the link of the same in the description below. You can go and check the same if you want to know about further details like fees, subjects, or anything else that you would want to know about this college, Faculty of Law, Banaras Hindu University. You can read up from there. Here in this video, our focus will be on the entrance exam as such. Now coming on to the paper pattern. 120 minutes, 450 marks, 150 multiple choice based questions from the areas of general awareness and current affairs, common legal knowledge, aptitude, mental ability. Now the paper will also include two sets of multiple choice question where either Hindi language or English language will be there to test you on. Now breaking this into simple chart form, सो टाइम जो है आपका इस एग्जाम के लिए 2 घंटे का है, 120 मिनट है आपके पास इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए. आपके मार्क्स जो हैं मैक्सिमम वो 450 मार्क्स हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 150 हैं. सो 3 मार्क्स आपको हर करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे और -1 डिडक्ट हो जाएंगे फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. यू विल बी अवॉर्डेड 3 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर देयर विल बी अ -1. 450 इज योर मैक्सिमम मार्क्स. अब सब्जेक्ट्स क्या देखने हैं इस एग्जाम के लिए? लीगल नॉलेज, GE and current affairs, aptitude, that is your legal logical reasoning, mental ability, and either Hindi or English. So people who are from Hindi background, they have an edge here कि आप हिंदी में भी ये पेपर दे सकते हैं. So there is an option here, unlike mostly all other exams where English is the medium of instruction and the language that you are tested upon.
नॉर्मली इंग्लिश पे ही आपको टेस्ट किया जाता है अदर एंट्रेंस एग्जाम्स में। अब अलॉटमेंट देखते हैं मार्क्स का। लीगल नॉलेज से 45 to 50 questions are asked. So this legal knowledge area forms a very important part of your preparation. Now obviously it is a law entrance exam, so legal knowledge is obviously important. Then coming on to GA and current affairs, GA से आपके 30 questions आते हैं। GA is your static GK portion. सो स्टैटिक जीके पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर्स से 10 क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड यानी लॉजिकल रीजनिंग से 15 क्वेश्चंस, मेंटल एबिलिटी से 25 एंड इंग्लिश या हिंदी का फिक्स्ड होता है दैट 20 क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम आइदर लैंग्वेज। सो 20 क्वेश्चंस आर फिक्स्ड फॉर योर इंग्लिश एंड हिंदी and all other divisions are given herein. Now those people who are preparing for DU LLB and also BHU, something you need to keep in mind is that जीए, एक तो जीए का वेटेज बहुत है। जो लोग डीयूएलबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बीएचयू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें ये ध्यान रखना है कि जीए जो है स्टैटिक जीके, इवन दो डीयू में बहुत कम पूछा जाता है, यहाँ पर 30 मार्क्स का स्टैटिक जीके आपका आ सकता है। और मैथ्स जिससे अभी हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस नहीं आए हैं डीयू में, बीएचयू में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 क्वेश्चंस मैथ से आपके पूछे जा सकते हैं। सो आपको, अगर आप डीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप एमएचसीईटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पे भी मैथ्स नहीं आता है, एंड आप बीएचयू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि आपको मैथ्स जरूर करना है बीएचयू के लिए। If you're preparing for DU, MHCET and BHU as well, then you have to give importance to maths, even though MHCET does not ask maths, but BHU does, and even though DU also does not ask, but BHU does. So GA and mental ability is important if you are preparing for multiple exams and also BHU. Then looking at लीगल नॉलेज को इंडिविजुअल ब्रेकअप करके देखते हैं कि क्या फर्दर सब्जेक्ट्स हमको लीगल नॉलेज में करने की जरूरत है। व्हाट फर्दर सब्जेक्ट्स वी नीड टू डू अंडर द हेड लीगल नॉलेज। कॉन्स्टिट्यूशन से आपके अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 क्वेश्चंस आते हैं। आईपीसी 4 to 5, कॉन्ट्रैक्ट 1 to 2, टॉर्ट्स 2, फैमिली लॉ 2 to 3, आईपीआर लॉ 1, legal current affairs 2 to 3, maxims 2, United Nations 1. And also there are further miscellaneous questions that are asked each year. They are asked randomly from any area. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पूछ लेते हैं, इन्वायरमेंट लॉ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो दोज एरियाज आर नॉट फिक्स्ड, यू नीड नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ देम। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसने की जरूरत है। दीज आर योर basic areas that you need to do. Now there are further individual topics also in these, that constitution में हमें क्या करना है, आईपीसी में क्या करना है, हर सब्जेक्ट के अलग टॉपिक्स हैं। आप चाहें तो हम वो सेपरेटली एक अलग वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए दैट इफ यू वुड वांट अनदर वीडियो टू डिस्कस दोज इंडिविजुअल टॉपिक्स, यू लेट मी नो इफ यू वांट टू know that what topics that we need to do in these areas, so that I can make another video for that. Now coming on to how to prepare. For these areas also there are individual topics that you need to do. We can discuss them in another video. Now for legal knowledge के लिए आपकी सेल्फ गाइड बुक्स आती हैं, जहां पर आपका मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन होता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका बहुत आई थिंक मिनिमल पेजेस में दिया होता है, एंड मोस्टली द बुक्स आर अबाउट क्वेश्चंस। दे आर 500 ऑड पेजेस बुक, काफी मोटी बुक्स होती हैं, एंड क्वेश्चन बेस्ड प्रिपरेशन होती है उन बुक्स से। सो आई वुड से दैट just don't rely on the self guide books like यूनिवर्सल, सिंघल, अरिहंत, ये जो भी बुक्स आती हैं सिर्फ इन्हीं पे रिलाई मत कीजिएगा। डू ऑल्सो चेक आउट अदर थिंग्स। अगर हम टॉपिक्स इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, सो यू विल बी क्लियर कि आपको क्या टॉपिक्स करने की जरूरत है। आप इंटरनेट से जाके पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड फ्रॉम द इंटरनेट अबाउट द टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। एंड just in case you want to save all the time and effort, you can check out our modules on our website www.lawdigest.in, जहां पर हमने सभी चीजों को, लीगल, करंट अफेयर, सभी चीजों को कवर किया है अपने तरीके से, so that you can check on our website. Further GA की अगर हम बात करें, the book that you need to look for static GK is Lucent's. That is the book that you need to see. Then for current affairs, opt for any monthly series. We also have the same available on our website.
देन स्पीकिंग ऑफ लॉजिकल रीजनिंग के लिए आप आर एस अग्रवाल देख सकते हैं, या फिर जो सेल्फ गाइड से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां से भी आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सभी प्रैक्टिस कर सकते हैं. यू कैन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आल्सो द क्वेश्चंस गिवन इन योर सेल्फ गाइड्स. देन मेंटल एबिलिटी एंड इंग्लिश हिंदी जो लैंग्वेज है, इन दोनों के लिए आप एनसीईआरटी कंसल्ट कर सकते हैं. एनसीईआरटी के अलावा भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सेल्फ गाइड से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं. एनसीईआरटी is for those who cannot really prepare just by practicing questions. जो लोग सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से पूरा प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, वो लोग एनसीईआरटी देख सकते हैं for these two areas to understand individual formulas. For English there are further books. vocabulary के लिए आप बुक्स देख सकते हैं, नॉर्मन लुइस की बुक आती है. देन फर्दर इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन देख सकते हैं फॉर ग्रामर रूल्स एंड एवरीथिंग. And NCRTs are obviously there. NCRTs basically mean your school textbooks जो CBSE बोर्ड में प्रिस्क्राइब है. NCRT अगर आप किसी और बोर्ड से भी हैं तो आपके जो भी बुक्स हैं आप वो देख सकते हैं. सो ऑल इन ऑल व्हाट वी कैन सी इज दैट एक इंडिविजुअल बुक नहीं आती है फॉर कवरिंग ऑल 5 सब्जेक्ट्स. देर आर डिफरेंट बुक्स. And for legal and current affairs, we also have our individual modules that are there, very nicely made. You can check on the website. And for others, the books I've already told you, I hope you've written. They are easily available on Amazon. You can look at those books. And further, I would say that do look at the past year question papers. Past year question papers भी हमारी website पे available है, modules में भी given है, just in case you do not find them on the internet. पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या है कि आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या क्या क्वेश्चन किस किस एरिया में करने की जरूरत है. पास्ट ईयर पेपर्स विल गिव यू अ क्लैरिटी ऑन व्हाट ऑल टॉपिक्स दैट यू नीड टू डू, हाउ यू शुड गो अबाउट इट, व्हाट इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर देयर. इफ वी स्पीक अबाउट द कट ऑफ फॉर दिस एग्जाम, इस एग्जाम की कट ऑफ की अगर बात करें तो 2020 की कट ऑफ देख लेते हैं. जनरल कैटेगरी के लिए 235 मार्क्स was the कट ऑफ. Then for OBC 191, for SC 165, for ST 93, and for EWS also 235 marks. सो अगर हम 2020 के पेपर की बात करें तो सेफ स्कोर जो है वो हमारा 235 प्लस था. कंसिडरिंग 2021, द मार्क्स दैट यू शुड एम फॉर इज 240 प्लस. 240 245 will be your safe score. You should try to aim for these marks if you wish to get admission into BHU. So with this, I think we've discussed all the important things that I had to discuss in this video. Further details के लिए I've already mentioned, you can look in the prospectus. For any other query, you can contact me through various social media platforms that I'm available on, and also you can mention any of your doubts in the comment box below.